Good morning. Once again, we are meeting to discuss another paper of your prelim exam. Its name is CSAT, Civil Services Aptitude Test. Now, this name is nowhere mentioned in your notification of prelim, and yet it is called so. Why do you think? Yes. Do you know why we call it CSAT and not simply GS paper 2 as it is mentioned in your prelim notification, right? So CSAT क्यों बोला जाता है? Because somewhere in the past, people who recommended this paper also called it aptitude test for civil services. So do you know who recommended this paper? किसके रिकमेंडेशन के ऊपर ये चेंज हुआ है आपके एग्जाम में? Who recommended it that there should be CSAT in your scheme of examination? क्या लगता है आपको? Okay, मैंने इसके वक्त भी आपको बताया था that you should be now curious enough about the career that you have chosen, है ना? और वो इंफॉर्मेशन फिगर आउट करना अभी इतना डिफिकल्ट नहीं, because this is an age of information and technology. Internet is everywhere. As long as you have smartphone and network, you can access it and you can find out the answers. Provided you should feel those questions first in your mind. कि आपको ये सवाल आना चाहिए, क्यों मैं ये पढ़ रहा हूँ? किसने ये बताया कि मुझे ये पढ़ना है? क्यों बताया? समझ में आ रहा है आपको? Because the person who recommended or committee which recommended it have thought something about it and then it recommended. ये out of whim and fancy नहीं होता है. समझ में आ रहा है? Do you know when this was introduced in your scheme of examination? 13? 11? 13 में तो आपका GS का मेन एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन प्रीलिम तो पहले चेंज हुआ है. प्रीलिम कब से है मालूम है आपको? आपके एग्जाम स्कीम में प्रीलिम का जो एग्जाम है वो कब से है मालूम है? वो पहले से नहीं था. At the time of independence, you would be surprised to know there was directly main exam and inter. Prelim नहीं था, prelim बाद में. So that's what I told you. And let me tell you frankly at the beginning, even though I may end up telling you n number of things, not all of you are going to follow all of those things. और ये कहने के बाद भी आप ऐसे ही करोगे. This has been our experience since batches after batches. जब आपका first attempt fail हो जाता है, second attempt fail हो जाता है, then you come back to us, and then you ask, sir, मेरा क्या गलत हो गया? Then we repeat the same thing which we are telling you today. कि आपने ये सब किया था क्या? And the answer is flatly no. So decide कि आप कौन से crowd का हिस्सा बनना चाहते हो, जो करते नहीं है फेल होते हैं या फिर जो करते हैं सक्सेस होते हैं. आपको थोड़ा क्यूरियस होना है. It doesn't take too much intelligence to create questions, to ask questions. Average intelligence है फिर भी you can ask relevant questions and figure out the answers. समझ में आ रहा है आपको? So ये पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट आया कहाँ से, किसने बताया कि इसको लेना चाहिए, क्यों बताया. And once you understand the perspective behind this, then you are ready for preparation. Because you understand the objective of putting this paper into your scheme of examination. Getting my point? So history, we will look at it in a short, very brief history of civil services examination. And then we'll go for a discussion about strategy. So in order to know significance of CSAT according to UPSC, पहला पैटर्न मालूम था आपको क्या था before CSAT? There were two papers, one GS and another was optional, right? And optional had almost twice the weightage of GS paper. And many people used to refer
almost 50% of people used to refer public administration as their favorite option. और उसमें सिर्फ एक ही किताब पढ़ने के लिए मैंडेटरी था, दैट वाज लक्ष्मीकांत फिगर बुक ऑफ, और उसी से सब आता था, and people used to qualify based on one book only. So you can understand to what extent it was predictable. UPSC said no, we need something else now. वो रीजनिंग क्या था ये आपको पहले मालूम होना चाहिए. So they first criticized earlier pattern that it was based on university syllabus, it was repetitive in nature, the questions were predictable in nature, and it tested memory more than understanding, more than thinking ability, more than problem solving skills. उसमें values ethics क्या है ये भी मालूम नहीं पड़ रहा है. So they recommended replacing earlier pattern by new pattern in which GS was retained, but optional paper is replaced by aptitude test. So aptitude tests, they said, are followed across the best business school in the world, like Harvard, then even in India, like IIMs, right? They follow aptitude test, and in terms of selecting right people for right job, they give best results because these aptitude tests are non-repetitive in nature. The kind of questions which are asked in aptitude test, unless you understand the question, you cannot solve them. So rote learning काम नहीं आएगा. Okay, your certain abilities are tested. So to begin with, language ability, mathematical skills, reasoning ability, problem solving skills, ये सब check किया जाता है. Okay, but you have to understand why they said so. ये क्यों उन्होंने कहा, अब क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा, ये आपको सब समझ लेना है. ठीक है. So for that we will take a look at milestones in the evolution of civil services exam. So पहला milestone है 1979. उस year में prelim was introduced. So if you search for previous year papers of prelim exam, 1979 तक के ही मिलेगा, इसके पहले का मिलेगा. Why? Because there was no exam. है ना? In 1969 they allowed Indian languages mentioned in 8th schedule of the constitution for 2 papers, GK and essay. For rest of the paper the language was English. उस वक्त का पैटर्न मालूम है आपको? At the time of independence 3 कंपलसरी पेपर हुआ करते थे, GK, essay and English. Then for all services people had to opt for 3 optional papers, 3 optional subjects. और एलिट सर्विस है IAS, IPS and IFS, अगर आपको उसको ऑप्ट करना है तो you needed 2 more optional papers. So 5 optional subjects you had to study at the time of independence. उस वक्त prelim. Can you guess the number of people who might have appeared for civil services at the time of independence? Roughly? Maybe Thousands. There were around 3,800. अब कितने appear होते हैं in the first stage? Apply तो 8-9 लाख करते हैं, लेकिन 50% of them lose steam before entering into the hall. So 5-6 lakhs around sit for prelim. और उसमें से around 13,000 are selected for main exam. और उसमें से twice the number of posts are selected for interview. अभी का पैटर्न ऐसा है, बट उस वक्त तो अलग था, because people were not educated, or even those who were educated, they had least awareness. आज भी देखो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इतना फैलाव है, इतना आउटरीच है, and yet even if you go to rural areas and ask people about UPSC MPSC, वो सिर्फ बोलेंगे हमने सुना है इसके बारे में, बनना है ऐसा कोई एग्जाम होता है, that's all. But if you ask about the nuts and bolts of it, so awareness is lacking. Then came Kothari Commission 1974-77, and it recommended
overhauling the structure of the exam. So it recommended introducing prelim stage and changing the structure of main exam. But why in 74-77? Why not before? क्यों आपको लगता है उस वक्त ऐसा क्या हुआ था? एग्जाम देने वाले ज्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई, लोगों को पता चल गया कि गवर्नमेंट एग्जाम है। That was the period of emergency. And people had seen brutal powers of government, and youth wanted to change it by entering into the system. So youth started writing exam on last day. So इतने लोगों का main exam paper check करना, that was an uphill task. So to weed out non-serious candidate, they introduced prelim stage, and that is the only function of prelim stage. कि जो non-serious है, unprepared है, उनको weed out करना. ठीक है? So prelim was introduced in 1979, and main exam was restructured. तो पहले का जो 5 ऑप्शनल थे वो रिमूव कर दिए, 2 ही ऑप्शनल उन्होंने रख दिए एंड 2 जीएस पेपर रख दिए एंड ऐसे जो था वो निकाल दिया, which was again reintroduced by सतीश चंद्र कमेटी for 200 marks. ठीक है? Then came YK अलग कमेटी. So मैं जो आपको पूछ रहा था किस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया first time for aptitude test, it was YK अलग. Have you heard this name? He still writes for Indian Express. So YK Alag, he still writes for Indian Express. He was the member of Planning Commission as well. ठीक है, इनके बारे में पढ़ो. He has contributed a lot to India through his work. He has worked on various domains. So इन्होंने बता दिया कि aptitude test अब लाओ and main exam को भी restructure करो. अब 2001 क्यों? उसके पहले क्यों? बताओ, guess. 2001 का significance क्या है? What is the significance of this year? Correct. LPG reforms had completed 1 decade. LPG, you know, liberalization, privatization, and globalization. उसकी वजह से government role changed. Earlier, it was mainly concerned about license quota permit Raj. Now, government opened up many sectors of economy to private sectors, where it already had monopoly, and it started acting as a regulator, facilitator. तो पहले वो कंट्रोल करते थे प्राइवेट सेक्टर को, अब उनको प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना पड़ा. समझ में आ रहा है? प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो बिकेम स्टेक होल्डर इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज. सो अभी हम जो पीपीपी प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं वो वही का सिग्निफिकेंस है. Now, to have people or officers who can successfully work with private sector, government realized we need people with different sets of skills. Skills अलग होने चाहिए, उनके values अलग होने चाहिए. Drastically अलग नहीं, but some addition has to be there. Professionalism has to be there. उनके पास ऐसे कुछ skill होने चाहिए, which will help them to work successfully with private sector. So उन्होंने फिर देखा प्राइवेट सेक्टर कौन से टेस्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं टू सिलेक्ट बेस्ट बिजनेस मैनेजर्स. So they realized aptitude test. So they recommended removing optional and instead there should be aptitude test for civil services in prelim. And in main exam they recommended retaining one optional. No, they recommended removing both the optional and bringing 4 GS paper. Okay. But UPSC retained one optional because optional checks your depth of understanding in a particular subject. And they also brought 2 more GS paper. Okay, इनमें ethics एक है. So YK Alag also recommended the introduction of ethics. Then came SK Khanna committee. Negative marking was introduced in 2008. So what is the significance of 2008? Why negative marking was introduced? सब प्राइम क्राइसिस जो यूएसए में हुआ था वो 2005 में हुआ था, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे यहाँ लेट आ गया एंड यूथ बिकेम अनएम्प्लॉयड.
At the same time, there were more vacancies in government, so they started writing on last scale. तो तुक्का यूज करते थे, तो नॉन सीरियस कैंडिडेट ज्यादा आते थे. So what they did, they introduced negative marking system. ठीक है. Then syllabus आ गया CSAT का, 2011 में CSAT आ गया, और उस वक्त स्कोरिंग था. अभी जो क्वालिफाइंग है उस वक्त स्कोरिंग था. So in first batch of 2011, many engineers passed just because of CSAT. समझ में आ रहा है? क्योंकि एप्टीट्यूड कंपोनेंट उनका स्ट्रांग था, तो मेंस के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे. समझ में आ रहा है? बट दे कुड क्वालिफाई सीसैट एंड दे वर सडनली इन द स्टॉर्म. अब क्या करें? पास तो हो गए, बट आगे कैसे जाना है? समझ में आ रहा है? एंड दिस हैपेंस टू मेनी पीपल इवन टुडे. दे फर्स्ट फोकस ऑन प्रीलिम, पास हो जाते, बाद में वो मेन का सोचते. दिस नेवर वर्क्स. You have to think about main exam first and then prelim later. ठीक है. 2011 में आने के बाद within 2 years there were protests, especially in North India, and people or aspirants from North India thought that this exam discriminates them against South Indians because they thought that South Indians speak good English, their English language ability is good. ऐसा उनको लगा. Then government appointed Dr. Arun Nigwekar committee. You know Arun Nigwekar, right? Have you heard about him? He was chairman of UGC. Okay. तो इनके कमिटी ने बता दिया कि this is not north-south divide, this is rural-urban divide. Urban areas have better quality of schooling, education, so people there have better aptitude skills compared to rural counterpart. So this committee recommended making it qualifying. So पहले 2014 में they made English comprehension irrelevant, and in 2015 CSAT was made qualified. So as on date, the status is you need to score 33% of the total paper, that is 66 marks, and once you qualify cut-off in GS 1, then you are there for main exam. Recently, government has appointed Basavan committee on reforming civil services, prelim particularly. It has given the report, but the report is not meant for me. So you have to keep your fingers crossed. That's the status as on date. So you don't know when changes will be there in civil services exam. Last scale नहीं होंगे because 2013 is not way back. 10 साल भी नहीं हुए हैं, तो ज्यादा changes नहीं होंगे, but prelim में कुछ हो सकता है. Depends. So far it works good. UPSC का भी फीडबैक ऐसा है कि it works satisfactory. So changes नहीं चाहिए, ऐसा as on date condition है, but you know. Political imperative भी हो सकता है, जैसे number of attempts were changed after month of 2013 change, है ना? पहले 4 थे ओपन के लिए, 6 बना दिए, and that change is still there. So political undercurrent भी इसके लिए responsible होते हैं, you don't know. But UPSC being constitutional independent body, उसको भी ये ऑटोनॉमी होती है कि कौन से चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, कौन से नहीं करने. ठीक है. हाँ. Yesterday, in the newspaper, after Agnipan need for VP part for civil services. नीति Part. हाँ. तो क्या 4 साल का सिविल सर्वेंट. डोंट वरी, ऐसा कोई नहीं जाएगा फिर ना. कौन मेहनत करके 4 साल के लिए जाएगा. But what they have done, they have introduced lateral entry. Lateral entry, you know, experts are being appointed at the level of joint secretary post, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया जाता है. They are on contract basis. उनको पे भी अच्छा होता है फिर कंपेयर टू करियर ब्यूरोक्रेट. तो वो उन्होंने क्यों किया? तो कोई सीए बंदा है या फिर किसी ने फाइनेंस में काम किया है, तो ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्यूरोक्रेट.
तो वो ऑप्शन उन्होंने अभी एक्टिवेट online people. Am I audible? We got disconnected. So let's continue. So this was in general background for the introduction of CSAT and its current status. Now let's look at the objective of today's topic. We want to discuss what should be the elements of strategy for preparing CSAT. So how do you define strategy? Yes. Plan. It is a plan. But do you think it is merely a plan? Yes. Can we call a plan equal to strategy? Yes. Plan to achieve a goal. Yes, goal oriented plan. लेकिन हर प्लान का गोल होता है. Without goal, what is the plan? है ना? So what else is there in strategy? Prioritizing topics, time constraint, implementation, or Important topic related. important topics. Okay. और क्या होता है स्ट्रेटेजी में? चेस प्ले करते हो आप? चेस में स्ट्रेटेजी होती है. और क्या होता है स्ट्रेटेजी में? और क्या होता है स्ट्रेटेजी में? वी टेक इनटू अकाउंट possibilities. So strategy is not mere a plan, it is a combination of plans according to different situations that are likely to arise in your implementation. Implementation में आप कुछ anticipate करते हो लेकिन वैसे ही होगा. Is that assured? No. In reality, sometimes life doesn't go the way we plan. So many of you have started your graduation with engineering. Now you have ended up here. कहाँ से कहाँ जाओगे you don't know. So what you need is not plan, multiple plans to deal with different challenges that are likely to arise during your implementation. So आपका civil services का plan नहीं बोलते. You call it a strategy. Right? And it depends on ground reality, strength, weaknesses, opportunity, threat. इसके ऊपर होना चाहिए. अगर इसके ऊपर नहीं होता है, then you often revise your plan. So study plan आपका जो रहता है, वो देखो आप कितने बार रिवाइज करते हो दिन में, है ना? क्यों? Because it is not realistic sometimes. From the day when you start planning 10 hours study, लेकिन लाइफ में कभी इतना हम पढ़ाई नहीं की, तो 10 घंटा कैसे पढ़ाई करोगे? Suddenly you plan, I will wake up at 4 AM. अगर आपका हैबिट ऐसा है कि 7-8 बजे आप उठते हो, हाउ विल यू सडनली गेट अप एट 4 AM? तो ये काम नहीं करता है. समझ में आ रहा है आपको? सो व्हाट यू नीड प्रॉपर स्ट्रेटजी वेयर यू विल हैव ग्राउंड रियलिटी. सो आपको खुद को पहले स्टडी करना है कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिजाइन योर स्ट्रेटजी. इवन इफ यू वांट टू इंप्रूव योर सर्टेन परफॉर्मेंसेस, स्टिल यू विल हैव टू वेट. यू कांट डू इट in one night. जैसे लैंग्वेज एबिलिटी है, तो आपका ये वन नाइट में इंप्रूव नहीं होगा. इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपके पास ये चाहिए, प्लान चाहिए. वो भी आपके स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है. सो देयर आर मल्टीपल प्लान्स विद इन वन प्लान. सो दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी. ओके, एप्टीट्यूड किसको बोलते हैं? ये हम इथिक्स में भी डिस्कस करने वाले हैं. हाउ डू यू डिफाइन एप्टीट्यूड? एनालाइजिंग स्किल्स, perform an activity, or yes, why it is not talent test or intelligence test or genius test? Why it is aptitude test?
सो एप्टीट्यूड में दो चीजें होती है, वन इज योर इंक्लिनेशन, है ना, whether you are inclined towards that field or not. But even if you are not inclined, जैसे many engineers, when they choose engineering, do you really think they choose out of love for engineering? But still they have aptitude, where they can go study certain things, score good marks and be a good engineer. हो सकते हैं. So first is inclination, but even if it is not there, what is the likelihood of your success if you are trained for that field? वो भी measure किया जाता है. So your entrance exams of engineering, medical, management, all these are aptitude tests. They are checking your certain abilities for that field. वो general abilities नहीं होती, वो specialized होती. So even if on the face, CAT's syllabus may appear similar to CSAT syllabus, but their contents are different. For example, passages that are given in reading comprehension or the question about mathematics, reasoning, है ना, ये अलग-अलग होते हैं. So what they are checking? Your aptitude for civil services. One में आ रहा है. Okay, why do we need strategy at all? Because UPSC exam is a dynamic exam. It is not set in pattern. Even though your syllabus is set, the way they are asking question changes from year to year. उसमें consistency नहीं है. And that's why you need multiple plans to take into account all those variations. इसके लिए आपको strategy चाहिए. एक plan काम नहीं करेगा. And this plan to handle exam will evolve over a period of time. वो fix नहीं रहेगा. जो भी आप पहले दिन बनाओगे, that won't be permanent plan. It will undergo change. उसमें बहुत सारे factors हैं. आपका preparation है, but more you understand yourself, strategy will change. ठीक है, ये भी element आएगा इसमें. Preparation भी आएगा. Not everything you can prepare till your exam. कुछ ऐसे element होते हैं जो बचे जाते हैं, because the syllabus is vast. तो उसको आप कैसे handle करोगे? इसका भी plan आपके पास चाहिए. क्योंकि सडनली अगर उसके ऊपर ज्यादा ही क्वेश्चन आ गए तो ऐसा भी हो सकता है ना, अनप्रेडिक्टेबल. तो ये डिफरेंट प्लान्स आपके स्ट्रेटेजी में चाहिए, इसलिए हमें स्ट्रेटेजी चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स इसमें क्या क्या करना है. ओके, सेट सिलेबस के कुछ एलिमेंट्स पाई चार्ट में दिए हैं. पहला है आरसी. इट इज मोस्ट डोमिनेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 weightage is given to reading comprehension. Then English comprehension is almost nil. So English comprehension में क्या होता है? You are not given Hindi passage. Okay, but reading comprehension में you are given Hindi option as well. ठीक है. Then LRA, logical reasoning, analytical ability, ये second most dominant element है, 32%. So again almost 1/3. And then next है general mental ability and basic numeracy. We together call it mathematics. ठीक है. Then there are other elements like DIDs, data interpretation, data sufficiency. ठीक है, इसमें graphs में होते हैं, तो ये भी आते हैं. So these are the 4 major elements that are part of your syllabus since 2015. जब से ये qualifying हुआ है, तब से इसका nature थोड़ा बदला है. Because there are other elements like decision making, interpersonal skills, including communication skills. वो syllabus में है, लेकिन पूछे नहीं जा रहे since 2013 क्योंकि आपका ethics का पेपर आ गया है. ठीक है, तो आपको ये अकाउंट करना है. But still looking at pie chart doesn't give you correct picture of the analysis of questions. For that we need table. So मैं आपको टेबल दिखाता हूँ. आपको ये ध्यान में आएगा, in last 3-4 years the number of questions on logical reasoning have gone down. दिख रहा है आपको? 19 से देखो आप, 19, 11, 15, 7, ये जो है ये डिक्लाइनिंग पैटर्न दिखा रहा है. This has remained almost constant in last 3 years, right? But this has gone up. Then DIDs may sometimes they have asked 0 questions and suddenly they have asked 14 questions. And that's why UPSC is sometimes sarcastically called as unpredictable public service commission. ठीक है.
तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव जस्टिस टू ऑल एलिमेंट्स, किसी को भी ऑप्शन मत दो in order to qualify. Why? Because since 2015 they have increased the difficulty level of the questions that are asked in CSAT compared to earlier. Because it is qualifying, people discount this paper, they ignore it till the prelim exam is around the corner. ऐसे नहीं होना चाहिए. If you assess yourself properly and if you realize you are lacking in certain basics, आपको from the day one उसके थोड़ा ध्यान देना है. So whether it is language ability, mathematical skills, reasoning ability, जो भी है, अगर आपके बेसिक उसमें ठीक नहीं है, उसको पहले रिफाइन करो. And then when the exam is around the corner, focus intensively on the syllabus, study the topic as our coaching proceeds and solve the mock test. That's all. Qualify करने के लिए इतना काफी है. लेकिन उसमें जो छोटे एलिमेंट है वो क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ. ओके, ठीक है, देखते हैं. आरसी में जाते हैं. आरसी में there are 4 types of questions which are frequently asked. One is inference, okay, second is main idea, so this is first, second main idea, third assumption, and fourth direct and specific questions. Out of these 4 categories, 1 to 3 के लिए methods है. There are steps, you can learn about them, you can follow them and you can figure out the answer. लेकिन ये जो 4th category है, this is uncertain, इसके लिए steps नहीं है. Because it is based on content of the passage, certain part of the passage, and it can be designed in variety of ways. So there are infinite variations. So you cannot pin it down suddenly through methods. लेकिन ये जो 3 है पहले, इनके लिए कुछ methods है. If you learn these methods, practice them enough, you can figure out the answer with fair sense of accuracy. ठीक है. Fortunately, the number of questions asked on these first three are fairly large in numbers compared to 4th. But if you analyze last year's paper, this is still 2021, 22 में देखोगे तो इसका नंबर्स बढ़ गया है और इसका नंबर्स थोड़ा कम हो गया है. So again, as I said, you should not discount any category or any type of question even within the syllabus. आपको हर एक एलिमेंट पे थोड़ा सा तो ध्यान देना है. You cannot completely ignore it because you don't know when UPSC is going to ramp up that category. समझ में आ रहा है आपको? So पहले 3 तो हम पढ़ेंगे, बट ये जो चौथा है इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हम क्लास में ले लेंगे through which you will understand how to tackle these questions. So for all 4 we have well designed exercises which includes combination of some model questions as well as previous year questions. इसका combination लेके we will discuss theory and we will practice it also. ठीक है. For RC prepare करने के लिए there are certain key points you should keep in mind. So पहला है language ability. ठीक है. A minimum level of language ability is must. It is not as if you need ornate language or flowery language. ये डिमांड ही नहीं है, बट मिनिमम सेंस आपको चाहिए. तो उसके एलिमेंट्स क्या है ये भी हम देखेंगे. सेकंड है आपको टाइप ऑफ आरसी क्वेश्चन पहले से मालूम होने चाहिए कि कौन से टाइप फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं. Because once you know the type of RC question, you have strategy for each type. उसको कैसे हैंडल करना है. And once you have that, you are more confident than the one who is not prepared. समझ में आ रहा है. Then अलग अलग टॉपिक भी आते हैं पैसेजेस के. Okay, for example, some passages are on philosophy. So कुछ लोगों को philosophy हजम नहीं होता है ना. कुछ लोगों ने साइंस छोड़ दिया होता है आफ्टर 10th. तो अगर सडनली साइंस एंड टेक पे आ गया तो कैसे करेंगे, है ना. इकोनॉमिक्स, सम पीपल फील इकोनॉमिक्स इज अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे. सम टॉपिक्स आर ऑन गवर्नेंस, सम आर बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज लाइक वुमेन, चिल्ड्रन, पॉवर्टी, हेल्थ.
some based on polity or thinkers of Pol Science. Pol Science में गड़बड़ हो जाती है. People who have optional of Pol Science, they use their interpretation of Pol Science in solving RC question. फिर गड़बड़ हो जाती है. समझ में आ रहा है? तो ये आपको खुद को पूछना है कि मेरा कंफर्ट कितना है इस टॉपिक में. अगर नहीं है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको ढूंढना है. Then not all writing is done in same style, so there are different styles of writing. Predominantly in modern writing they are using structured ways of writing. You know, structure होता है, कुछ तो लॉजिक होता है. लेकिन जो ओल्ड वाला राइटिंग है, ओल्ड इंग्लिश, जिसमें वन सेंटेंस इज इक्वल टू वन पैराग्राफ, इतना बड़े सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए यू शुड बी एबल टू पैराफ्रेज दैट पैराग्राफ इनटू सिंपल लैंग्वेज एंड देन अंडरस्टैंड इट. सो हर एक स्टाइल का खुद का अलग अप्रोच होता है, वो आपको समझ लेना है. एंड फाइनली this is an exam where examiner tries to trap you by using various techniques where you are likely to commit mistakes. So out of 4 options 2 can be easily eliminated, लेकिन जो remaining 2 है उसमें confusion पैदा करेंगे, ऐसे ऑप्शन डिजाइन किए जाते हैं. तो उसको अगर आप आइडेंटिफाई करोगे beforehand, you will be able to overcome that. समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट है आरसी प्रिपरेशन के, ये आपको माइंड में रखने हैं. So इसमें I'll talk about few of this. First is language ability. Language ability के लिए पहला एलिमेंट जो है vocabulary. And vocabulary is not unidimensional, है ना? सिर्फ वर्ड एंड उसका मीनिंग इतना ही नहीं होता है. It is multi-dimensional. So इसके लिए हम एक लेक्चर लेंगे and in that lecture I will try to highlight different aspects of vocabulary. बट वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपको वर्ड का करेक्ट यूज मालूम है. यू शुड बी एबल टू यूज दैट वर्ड एक्टिवली इन योर यूसेज, राइटिंग, स्पीकिंग, उसमें वो आना चाहिए. देन ओनली यू विल बी कंफर्टेबल इन हैंडलिंग आरसी पैसेजेस. सो इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या है ये हम सीखेंगे एक लेक्चर में. देन ग्रामर का भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है. देन यू नीड टेंसेस एंड देयर यूजेस एंड करेक्ट यूजेस. ये 3 टॉपिक आपको मालूम होनी चाहिए. सो गुड वोकैबुलरी के लिए एक किताब लिख लो, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड्स एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी. इट इज द बेस्ट डिक्शनरी. ऑक्सफोर्ड्स एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी. ऑक्सफोर्ड्स एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी. ये इंग्लिश टू इंग्लिश है and it helps you to improve your language ability because it is not merely giving you synonyms, because it is known as thesaurus. If it gives you synonyms, it explains you or it gives you definition of the words. और उसके contextual meaning भी होते हैं, phrasal verbs भी होते हैं, idioms भी होते हैं, ये सब हम सीखेंगे, ठीक है. सेकंड है ग्रामर. ग्रामर के लिए you should use Wren and Martin. English Grammar by Wren and Martin. K.S. Chan publication का किताब है. Wren and Martin, W-R-E-N, Wren and Martin. तो इसमें 3 चीजें आपको सीखनी है. टेंसेस, ठीक है, उनके यूजेस क्या होते हैं. देन सेंटेंस स्ट्रक्चर, व्हाट आर द डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड. एंड थर्ड इज करेक्ट यूजेस. बाकी टेक्निकल ग्रामर आपको नहीं चाहिए. पार्ट ऑफ द स्पीच एंड रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है. एंड फाइनली, while writing certain things, the writer employs indicator words to show what he or she is doing. So do you remember our essay का lecture? उसमें मैंने आपको बताया था कि clarity लाने के लिए use paragraph connectors. उसमें connectors होते हैं, therefore, thus, है ना, ऐसे words use किए जाते हैं and these words highlight certain functions of the sentence or ideas. अगर आपको पहले से ही मालूम है, then you can interpret the topic easily. तो ये कौन से वर्ड्स है, उनका फंक्शन क्या है, ये आपको समझ लेना. So all this we will study as a part of RC. मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा wherever it is applicable. Second is about type of question. So पहला है मेन आइडिया, ये हम पढ़ेंगे, इसके लिए अलग एक्सरसाइजेस है. तो बहुत बार जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, make it a habit of asking this question to yourself कि पूरा आर्टिकल
के बाद you ask yourself what is the main idea of this entire article, कि जिसको प्रूव करने के लिए ऑथर लिख रहा है। समझ में आ रहा है? ये अगर आदत आप डालोगे, it will be sort of familiar thing for you. सेकंड ऐसा है कि मेन आइडिया के लिए सिर्फ यही फ्रेज नहीं यूज की जाती है, दे यूज डिफरेंट वर्ड्स लाइक सेंट्रल थीम और थीमेटिकली सेंटर्स ऑन, बेस्ट सम्स अप, क्रक्स, ऐसे जो अल्टरनेट वर्ड्स है, दे ऑल मीन मेन आइडिया। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टाइल है ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ये आपको फेमिलियर होना चाहिए। देन सेकंड, इन्फरेंस। सो इन्फरेंस को हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन। इन्फरेंस ऐसी चीज होती है जो पैसेज में डायरेक्टली नहीं दी होती है, बट इट इज बेस्ड ऑन पैसेज। बट अगेन दे आर नॉट यूजिंग सेम वर्ड अगेन एंड अगेन, दे आर यूजिंग वर्ड लाइक implies, implied, implication। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके तरफ आपको ध्यान देना है। देन assumption. Now see, inference and assumption both are not given in the passage, they both are indirect. But how would you distinguish between assumption and inference? ये भी आपको सोचना है। If both are indirect, you should not confuse one for the other. You should know the exact relationship between text which is given in the passage and assumption and inference on other side. So ये आपको आरसी में सीखना है, ठीक है? Then there are specific questions, direct and specific questions. इसमें मैंने जैसे बोला है, there are too much variations in these questions. So what you need is a bit alertness. You cannot assume that you know how to answer these questions. You have to take into account the exact demand of the question. वो अलग अलग हो सकती है, तो उसके लिए कोई मेथड नहीं है। एंड फाइनली ऑथर्स पर्पस, ये अब तक पूछा नहीं गया है, बट हु नोस, सो वो भी हम पढ़ेंगे। So mainly 4-5 type of question we will handle: main idea, inference, assumption, specific question, and author's purpose. For that we have variety of exercises designed. You'll be given study material, hard copies, soft copies, and we will sit in the class, discuss first theories, and then we will go for solving the questions and discussion. ये हमारा method रहेगा. The next different approaches to handle the writing. So इसमें से पहला जो है structure of the passage approach, ये आपको 90% of the time लगता है, because most of the modern writing is structured writing. So once you know the structure or skeleton of the passage, you can answer questions easily. But these two methods are needed for different scenario. For example, storyline method is needed when structure is not visible. समझ में आ रहा है? Structure is not visible. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस इसके बीच का रिलेशन आपको समझ में नहीं आ रहा, दे अपीयर आउट ऑफ ब्लू, रैंडमली लग रहे हैं आपको, तो उनका रिलेशन फिगर आउट करना है. यू नीड स्टोरी लाइन मेथड, एंड दिस ऑप्टिमाइज्ड रीडिंग मेथड इज नीडेड व्हेन टाइम इज इनएडिक्वेट. समझ में आ रहा है? ये कब आपको लगता है कि आपके पास वक्त नहीं है, सो विद इन लेस टाइम यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर, सो उसके लिए बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड रीडिंग, एंड इट इज ऑफन यूज्ड इन लार्ज पैसेजेस. सो हर एक स्टाइल का खुद का एप्लीकेशन है, वो समझ के आपको यूज करना है. ओके, सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज मैथ्स. मैथ्स के एलिमेंट देखो, सर ने आपको बताई होंगे, बट आई विल रिपीट इट. फर्स्ट इज नंबर सिस्टम. इसमें आपका बेसिक चेक किया जाता है अबाउट नंबर्स. So category of numbers, operations perform on numbers, है ना, फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, ये सब इसका बेसिक चेक किया जाता है. इंटीजर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सब चेक करने वाला एस्पेक्ट. नाउ दे आर आस्किंग प्रीडोमिनेंटली. इसको अब ज्यादा वेटेज दिया है कंपेयर टू अर्लियर पैटर्न. जो 11 से शुरू हुआ था उस वक्त इतना नहीं था, बट नाउ दे आर आस्किंग मोर एंड मोर. So unless your basics are clear, you can't answer it. And this is where many people are, losing their precious marks and time. So इसके लिए best resource, sir might have told you, NCERT. No any other competitive exam.
यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड, समझ में आ रहा है आपको? और वहां से आपको बेसिक्स पहले करने हैं। एंड सम ऑफ यू हु आर अफ्रेड ऑफ मैथमेटिक्स, दे शुड स्टार्ट अर्ली, है ना, वरना तारे जमीन पे हो जाएगा फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए इन द एग्जाम हॉल। सो जो सिंपल है, सिंपल आइडिया, सिंपल कंसेप्ट, उसको पहले एसिमिलेट कर दो, ठीक है? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर दीज 4 जिनके ऊपर हमेशा सवाल आते हैं, एंड दे डोंट हैव देयर ओन स्पेसिफिक मेथड्स, दे आर जनरल टॉपिक्स। समझ में आ रहा है? उनके खुद के ऐसा कुछ मेथड नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टॉपिक्स, यू कैन हैंडल द क्वेश्चन। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है फिर। So if you focus mainly on these 5 topics altogether, it covers your more than 70% of syllabus. अब ये जो बचे हुए टॉपिक है, these are mainly technical topics. Technical, they have specific application in real life, and they have their own methods. So पहले आपको क्या करना है, इसको प्रायोरिटी देना है first, and once you have mastery over this first, you should go for second. या बाद में लोगे तो भी चलेगा, बट फर्स्ट बेसिक इसको आप ध्यान दे दो। एंड दिस इज इजी इन माय ओपिनियन, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द डे 1 एंड रिवाइज योर बेसिक्स। या पहली बार नहीं पढ़ते, समझ में आ रहा है? लाइफ में आपने कभी ना कभी तो ये पढ़ा है, आपको सिर्फ उसको रिकॉल करके थोड़ा रिफाइन करना है, ठीक है? एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट। बाद में लेक्चर में क्या करेंगे, आपके जो टीचर है, दे विल टीच यू दिस टेक्निकल थिंग्स एज वेल। मेथड्स आपको बताएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, क्लॉक है, ट्रेंड है ना, ये जो अलग अलग टॉपिक है, वर्क टाइम है, प्रॉफिट लॉस है, इनके मेथड्स है, एरिया, वॉल्यूम, कैलेंडर, रेस। लेकिन ये जनरल है, जनरल मैथ्स जिसको बोलते हैं, इसको आपको पहले प्रायोरिटी देना है फ्रॉम द डे। इज दैट क्लियर? सो ये करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। लेट्स लुक एट टेबल फर्स्ट। देखो नंबर सिस्टम, इट इज कंसिस्टेंटली गोइंग अप, एंड दिस, as I said, first 5 topics, they are favorite of UPSC. बाकी के इसमें कम आ रहे हैं, so you should not too much be worried about technical topics. अगर वो आपको आते भी नहीं है, still it doesn't matter, ठीक है? उनका बेसिक मालूम हो गया काफी, लेकिन ये इसको आपको पहले प्रायोरिटी देना है, because it is available and they are asking more and more with the passage of time, ठीक है? नेक्स्ट है बेसिक थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो पहले आपको पूछना है कि मुझे ये स्किल आते हैं कि नहीं, बेसिक न्यूमरेसी के। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम ग्रांटेड पकड़ते हैं, बट व्हाइल डूइंग इट पीपल कमिट मिस्टेक्स। ये आपको नहीं होना चाहिए, समझे? ये आपको मिनिमम, जब आपको ये आ जाएगा देन यू कैन हैंडल एनी कॉम्प्लेक्स डेटा विद कॉन्फिडेंस। लेकिन बेसिक ऑपरेशन में गड़बड़ है तो कॉम्प्लेक्स डेटा कैसे हैंडल करोगे? समझ में आ रहा है आपको? सो बेसिक ऑपरेशंस आपको आनी चाहिए। देन इसमें की डिमांड ऐसी है इन दिस टॉपिक, यू शुड बी एबल टू क्रिएट इक्वेशंस। ये स्किल आपको आना चाहिए बाय कन्वर्टिंग वर्बल डेटा इनटू इक्वेशन फॉर्मेट एंड देन सॉल्व इट। एंड ये इजीली नहीं आता है। For that you need some insights as to mathematical concept, but it is not required in all time. Sometimes you need tally method as well. Tally method, reverse. इसमें ऑप्शन आप पहले देखते हो and you just cross check which option fits your question. So instead of going for a detailed step by step solution, you can go in reverse way. It saves you a lot of time. But in mathematics also they have started using this element, language ability. So they are framing question in such a way that they are more likely to confuse you. So simple formula मालूम है, concept मालूम है, इतना कॉपी नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? What you need is language ability as well. They are twisting the question. They are using words like if, then, only if. ये आपको confuse करने वाले words हैं in the context of mathematics, है ना? हमें जो आदत पड़ी है in school system is straight forward maths, लेकिन maths with language ability ये नया challenge है. So never ever ignore language ability in maths as well. आरसी के लिए तो important है ही, लेकिन mathematics में भी important है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. Is that clear?
इसमें कुछ सवाल है आपको मैथमेटिक्स के बारे में, बिकॉज आई बिलीव दैट सुजीत सर माइट हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ बहुत सारा कवर होता है सिस्टमेटिकली, बट बेसिक्स के लिए लिमिट्स है। कुछ हद तक उसके नीचे हम जाके सिखा नहीं सकते आपको, या आपको ही कुछ कवर करना है। लैंग्वेज एबिलिटी में भी वैसा ही है, वी कांट टीच यू ग्रामर नाउ, है ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक हम हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर हम आपको सिखा नहीं सकते, बिकॉज दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कोर्स, है ना। ये एक लेक्चर में या 15 मिनट में नहीं होता है। फॉर दैट यू नीड योर ओन इनिशिएटिव। वैसे ही मैथ्स के लिए बेसिक ऑपरेशंस आपको खुद को सीखने हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड इन रिलेशन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में पजल इज द मोस्ट फेवरेट, बट इन लास्ट फ्यू इयर्स इट इज गोइंग डाउन, बट यू डोंट नो व्हेन इट विल बी आस्क्ड अगेन प्रेडोमिनेंटली। इसमें मेनली क्या होता है, डेटा अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। They give you assorted data, it is arranged in random way, you have to put it in logical order। वो डेटा कंप्लीट नहीं होता है, it is incomplete data, but by using your reasoning ability you have to complete that data and answer the question। इसमें मेनली जो टाइप आता है वो है 5x3 मैट्रिक्स। okay, so 3 categories and for each category you have 5 data points। बट ये कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, एंड यू हैव टू यूज योर एबिलिटी टू रीजन आउट एंड आंसर द डेटा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। बाकी के टेक्निकल टॉपिक के लिए हर एक के खुद के मेथड्स होते हैं, ओके। जैसे नॉन वर्बल इज बेस्ड ऑन डायग्राम, ये भी कंसिस्टेंटली नहीं आता है। इन लास्ट 3 ईयर दे हैव नॉट यूज्ड इवन सिंगल डायग्राम, लेकिन पहले आई है 4 डायग्राम, 4, समटाइम्स 2। Then judgmental reasoning is more like RC, but RC में बड़ा पैसेज होता है। Judgmental reasoning में they give you 1 or 2 sentences and they ask you to conclude based on sentences, but sometimes they ask you figure out assumption of the sentence। इसमें assumption क्या है ये निकालो। So methods are equivalent to RC, but they are not exactly similar to RC, क्योंकि RC में आपका conceptual awareness भी देखा जाता है। They are trying to check your conceptual awareness of various field। लॉजिकल रीजनिंग में वो नहीं देखा जाता, ठीक है। देन देयर आर अदर टॉपिक्स वेयर यू हैव मेथड्स लाइक डायरेक्शन सेंस टेस्ट, देन ब्लड रिलेशंस, क्यूब, वेन डायग्राम, इसके मेथड्स है। देन फॉर सिलोजिज्म वी विल स्पेंड ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। ये आपको एक लेक्चर में काफी नहीं है, उसकी थियरी के लिए ही मोर देन 70% लेक्चर इज नीडेड, तो प्रैक्टिस के लिए और एडिशनल लेक्चर लगते हैं। देन यू हैव आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। एंड मिसलेनियस में सीरीज बहुत बार पूछे जाते हैं, एंड दीज आर समटाइम्स टफ सीरीज टू क्रैक। समझ में आ रहा है? सो ये रिपीटेड टॉपिक्स है वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड अगेन एंड अगेन, इनके ऊपर ही फोकस करेंगे। इफ यू नीड गुड बुक फॉर दिस देन यू हैव RS अग्रवाल, बट आपको ये ध्यान में रखना है इट गिव्स यू मोर देन व्हाट यू नीड। तो सब टॉपिक उसमें स्टडी नहीं करने, यू हैव टू focus on those topics which are asked only UPSC, so PYQs। तो हम भी क्लास में जो प्रैक्टिस करेंगे those mainly will be PYQs, ठीक है। then only you'll have better idea how they are asking and how to solve, that's all, ठीक है। अब इसके कुछ टेक्निक्स आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, इसमें फॉर्मूला का यूज ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ क्यूब ऐसा एक टॉपिक है जहां यू आर यूजिंग फॉर्मूला, कुड यूज, but even if you don't use still you can solve। so formula ज्यादा नहीं है, so for maths guys this is comfort zone, ठीक है। but इसके लिए और एक चीज ध्यान में रखनी है, डाइवर्सिटी बहुत है, okay। no question appears similar to other question, the huge diversity है, तो इसके लिए आपको थोड़ा खुद को ट्रेन करना है। then you need practice a lot, क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्निक नहीं स्पीड भी चाहिए आपके पास, then only you can complete it within time। देन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं टेक्निकल जिसके लिए की आइडियाज आपको मालूम होने चाहिए। जैसे ब्लड रिलेशन में द की आइडिया इज जेंडर, अगर जेंडर आपको मालूम है तभी आप डिसाइड कर सकते हो व्हाट इज द रिलेशन। जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, लेकिन बी का जेंडर मालूम नहीं, यू कैन नॉट डिसाइड हु इज बी टू इज, इट कुड बी ब्रदर और सिस्टर। सो हर एक टॉपिक का खुद का कुछ की आइडियाज होता है। वंस यू डेवलप द ग्रिप ऑन द की आइडिया यू कैन हैंडल दैट टॉपिक।
समझ में आ रहा है आपको? देन समटाइम्स, नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, sometimes UPSC asks you such question which you have not encountered once in your lifetime, unique, innovative. तो अगर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, then obviously you don't know method. समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मेथड मालूम नहीं है, how will you solve it? तो इसके लिए आपको इसके तरफ ध्यान देना, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसका नेचर आप स्टडी करो, उसका पैटर्न देखो, उसमें कुछ पैटर्न है कि नहीं, वो पैटर्न इटसेल्फ विल गिव यू आंसर. समझ में आ रहा है आपको? सो ऐसे सवाल कैसे हैंडल करने ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज देयर विल बी फ्यू सच क्वेश्चंस व्हिच वी विल डिस्कस इन द क्लास. देन हियर आल्सो यू कैन यूज टैली मेथड. ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्टेप बाय स्टेप, you can directly look at option and which option answers your question best is the right option. And our reasoning also uses twist of language. Sometimes some such sentences are given in your question where you are confused. आपको मालूम नहीं होता कि इसका मीनिंग कैसे निकालें, and there you are likely to commit mistakes. So यहाँ भी language ability matter करता है. So it is not only important in RC case, it is important in maths, it is important in listening as well. So throughout exam, your language ability is tested in variety of stages. Prelim में भी है, main में तो है ही है, and in interview also it is tested. So never ever ignore this component. Language ability minimum आपके पास होनी ही चाहिए. Is that clear? अब overall strategy क्या चाहिए? Overall strategy means before entering into exam hall, where you should focus. So पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? Easy element, easy topics, वहां से शुरुआत करनी है, because it gives you momentum and confidence. Even though our honorable Prime Minister sometimes gives advice to students that you should start with difficult questions, but keep in mind that advice is only for exceptionally brilliant people. समझ में आ रहा है? हमारे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे, इनके लिए सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? इजी क्वेश्चन फर्स्ट. इज दैट क्लियर? क्योंकि उससे मोमेंटम आ जाता है एंड यू गेट कॉन्फिडेंस. मोर दिस इज क्वालिफाइंग पेपर. यू नीड नॉट स्कोर टॉप इन द क्विज. अगर आपका 66 स्कोर आ जाता है भाई, यू नीड टू स्कोर 100+ मार्क्स. समझ में आ रहा है आपको? सो इजी एलिमेंट फर्स्ट. सेकंड, आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए व्हाट आर दोस सब्जेक्ट्स वेयर यू आर नॉट गुड. ऐसा हो जाता है ना, यू प्लान इट वेल, लेकिन बाय द टाइम एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर यू रियलाइज कि कुछ टॉपिक्स मेरे पढ़ाई नहीं हुआ. तो अगर आपको पहले से ही अवेयरनेस है कि इसमें मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ है, यू शुड नॉट टच दैट टॉपिक इन द एग्जाम, क्योंकि उसमें गलतियां ज्यादा हो सकती है. ठीक है? देन यू शुड आल्सो नो योर रीडिंग स्पीड. इसके ऊपर आपको पहले से ही ध्यान देना है. सो ऑन एन एवरेज इन योर CSAT, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू नीड टू रीड आर 8000. समझ में आ रहा है आपको? बट एक ही रीडिंग में सब समझ में आता है क्या? मिनिमम 2 रीडिंग चाहिए. सो 16,000. समझ में आ रहा है आपको? 120 minutes are given to you to read, understand and solve. अगर if you divide number of words to be read divided by number of minutes, roughly your average speed should be 150 words per minute. Roughly. Then only you can read entire paper, understand it and solve it. उतना तो मिनिमम चाहिए 150. More is better, but इसमें understanding is involved, not simply reading mechanical. आपको पढ़ते वक्त वो समझ में भी आना चाहिए. So 150, और आपको खुद को चेक करना है by using your timer कि अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग स्पीड होता है. समझ में आ रहा है? कुछ लोगों का मैथ्स में स्पीड अच्छा होता है, बट पैसेजेस में गड़बड़ हो जाती है, एंड वाइस वर्सा. तो आपको अलग-अलग टॉपिक का अलग-अलग स्पीड मालूम होना चाहिए. अकॉर्डिंगली यू कैन डिजाइन योर स्ट्रेटजी. ठीक है? देन दिस आल्सो इज इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जाम. इसमें क्या क्या है देखो, टारगेटेड मार्क्स. सो मिनिमम टारगेट हमारा 66 रहता है, लेकिन 66 मत रखो, 80 या 100 रखो, इसके बीच में रखो. देन एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी कितना है, एंड इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड. सो एक्यूरेसी आपको प्रैक्टिस के बाद मालूम हो जाएगी. वंस यू सॉल्व सम मॉक टेस्ट, आपको मालूम होगा कि आपका परसेंट ऑफ एक्यूरेसी कितना है, कितनी गलतियां होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है. एंड अकॉर्डिंग टू योर टारगेटेड मार्क्स यू विल कम टू नो
नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व। तो इसके लिए एक टेबल हमने डेवलप किया है। Once you use that table, you will know your strategy. ठीक है? Then you should also practice time saving methods. So time saving method में elimination method आते हैं। You know elimination method? एक अगर सेंटेंस गलत होता है तो 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। And what you get is remaining right question. ठीक है? टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए। If you decide that you are going for 1 round only, second round नहीं लोगे, so roughly your 20 questions per 30 minutes, ऐसा आपका स्पीड होना चाहिए। So every half an hour you should check whether you have solved 20 questions or not. If you are going for 1 round only, second round नहीं लोगे, second round लेना है तो you have to complete your 1 round in 1.5 hour and remaining 30 minutes for second round. So ये strategy आपके मन में पहले ही चाहिए, and you realize this at the time of mock test. मॉक टेस्ट में आपको मालूम हो जाएगा कि whether you need first round or not. अगर फर्स्ट राउंड में बहुत सारे सॉल्व नहीं होते then you need second round. लेकिन फर्स्ट राउंड में ही you are attempting good enough number of questions to qualify the CSAT paper, then you need not go for second round. समझ में आ रहा है आपको? And finally you have to learn how to figure out easy question, and this is important. In CSAT every year they give you such questions which you cannot solve within the given time. ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो कोई भी उस वक्त में सॉल्व नहीं कर सकता है, because they are novel, because they are lengthy, and because they are very conceptual. तो ऐसे सवाल को छोड़ देना, that is the right strategy. तो इसके लिए इजी कौन सा है ये आपको फिगर आउट करना है, and you will be surprised to know, no matter the variation in question, every year they are giving you at least 40 easy questions out of 80. 80 में से 40 इजी रहते ही है, बट आपको उसमें स्किल क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई करना और उनको ही सॉल्व करना, दैट्स ऑल। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ईदर पीपल गेट स्टक अप इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनको ऐसे लगता है कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है, देखता हुआ दैट इगो इशू, यू नो, इंजीनियर हूं तो मुझे क्यों नहीं आता है। आपको ऐसे नहीं करना, योर ऑब्जेक्टिव इज टू पास द एग्जाम, दैट्स ऑल। यूपीएससी को प्रूव नहीं करना है आपको, आप कितना जीनियस हो, स्मार्ट हो, बाद में करो। समझ में आ रहा है? सो इसके लिए आपको विद प्रैक्टिस यू लर्न हाउ टू फिगर आउट इजी क्वेश्चंस एंड यू हैव टू हैंडल दैट मच ओनली। 40 अगर आप सॉल्व करते हो एंड यू गेट ऑल करेक्ट, यू आर गेटिंग 100 मार्क्स, मोर देन नेसेसरी। व्हाट यू नीड एल्स? सो आपको थोड़ा वो एबिलिटी चाहिए टू लीव हार्ड क्वेश्चंस, नॉट टू टच देम, लेकिन उनको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए, है ना? उसके लिए प्रैक्टिस लगता है। ये टेबल है, नॉर्मली आपको बताता है कि एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, या एक्यूरेसी है तो क्वेश्चन कितने होनी चाहिए। मानो आपका टारगेट है 80 मार्क्स, ठीक है, एंड सपोज यू आर सॉल्विंग 80 क्वेश्चंस, तो आपको 44 ही करेक्ट लाने, दैट्स ऑल, देन यू विल गेट 80 मार्क्स। बट इफ योर टारगेट इज 100, देन आपको 50 करेक्ट लाने। ये टेबल आपको सिंपली एक्सट्रापोलेट करके दिखा रहा है। सपोज यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट 80, यू आर एबल टू कंप्लीट 60 क्वेश्चंस एंड आपका टारगेट है 80, देन यू नीड 39 करेक्ट क्वेश्चंस। अगर आपका टारगेट है 100, यू विल नीड 45 करेक्ट आउट ऑफ 60। सो एक्यूरेसी कितना चाहिए? 75%। इज दैट क्लियर? सो ये टेबल आपको टुवर्ड्स द फाइनल मॉक टेस्ट की जो 4-5 आप सवाल क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें ही आपको यूजफुल रहेगा। एंड वंस यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, यू नो योर एक्यूरेसी, यू नो योर स्पीड, यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेकंड पेपर। But it has happened because people have not paid enough attention to second paper, they have failed despite their good performance in first paper. ऐसा बहुत बार हुआ है last 2 years। तो ये रिस्क आपको नहीं लेना है। क्वालिफाइंग में अगर फेल हो जाओगे तो इट इज नॉट वर्थ। समझ में आ रहा है आपको? क्वालिफाइंग है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए 33%, दैट्स ऑल। ठीक है, ये 19 का एनालिसिस है। इसमें अगर इफ यू लुक एट द डिफिकल्टी लेवल, आउट ऑफ 80 40 वेरी इजी, 41। सो ये एनालिसिस इट इज आल्सो ट्रू फॉर 20, 21 एंड 22 as well। सेम लेवल है उनका,
So they are not expecting you to solve all questions, score in all questions. They are expecting you to identify easy and solve that much only. That's all. इतना ही आपको करना है, इसके आगे नहीं जाना. Is that clear? तो how to figure out easy question? इसके कुछ इंडिकेटर्स है, ये ध्यान में रखो. फर्स्ट, अवॉइड अनफैमिलियर क्वेश्चन. ऐसा सवाल अगर आपके सामने आता है जो अब तक आपने सॉल्व नहीं किया है, टाइप कैटेगरी, तो उसको प्रायोरिटी मत दे दो, उसको बाद में ले लो. सो जो बाद में लेना है उसको राउंड करो. यू विल टेक इट लेटर. समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन भी अनफैमिलियर हो सकती है, पैसेज भी अनफैमिलियर हो सकता है, या टॉपिक भी अनफैमिलियर हो सकता है, या टाइप ऑफ क्वेश्चन भी फैमिलियर हो सकता है. तो उसको पहले अवॉइड करो. ठीक है, उसको प्रायोरिटी मत दे दो, बिकॉज यू गेट स्टक अप एट दैट. और जब भी आप अलोकेटेड टाइम से ज्यादा स्पेंड करते हो, यू फील ऑब्लाइज्ड टू सॉल्व इट, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने ऑलरेडी इतना टाइम दिया है, तो अब क्यों छोड़ूं. दैट कैलकुलेशन गोज ऑन. ये आपको नहीं करना है. सेकंड, अवॉइड क्वेश्चंस वेयर बिग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड टू आंसर वेरी फ्यू क्वेश्चंस. सो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है लेकिन एक या दो ही सवाल आप आंसर कर पा रहे हो, उसको पहले मत करो. ये जो ट्रेड ऑफ है टाइम एंड मार्क्स, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सो उसको बाद में ले लो. सेकंड, यूज एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से क्या होता है? फॉर एवरी 1.5 मिनट यू एंड अप सेविंग 1 मिनट. सो आपका मोर देन 66% टाइम सेव होता है एलिमिनेशन मेथड से. सो wherever possible use elimination method, use tally method, and in certain questions if even if word, phrase or sentence is not familiar, ambiguous, avoid it. ठीक है, लेकिन ये सब करने के पहले आपका पहले प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो सब अनफैमिलियर लग सकता है. और जितने अवॉइड किए उसकी काउंट ज्यादा हो सकता है. समझ में आ रहा है आपको? So if you practice enough, you'll have proper judgment. Otherwise वो judgment भी गलत हो सकता है. ये आपको सब ध्यान में लेना है. Is that clear? ठीक है. Okay, इसमें बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं by aspirants. Can we do away with difficult components of the syllabus? तो इसका simple answer है no. Even if it is tough for you, like maths for some people, still you should focus on easy limits of maths. मैथ्स में सब टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होते, चैलेंजिंग नहीं होते, कुछ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनको आप पहले हैंडल करना सीखो. हाँ, ये भी सवाल आता है कि व्हेन वी कैन स्टार्ट. सो सम पीपल कैन अफोर्ड टू स्टार्ट बिफोर फ्यू मंथ्स, क्योंकि उनके बेसिक अच्छे होते हैं, मैथ्स, लैंग्वेज एबिलिटी. तो उन्होंने अगर पहले से शुरुआत नहीं की फिर भी चलेगा. बट फॉर दोज पीपल हुज बेसिक्स आर नॉट क्लियर, उनको पहले से ही शुरू करना है. ठीक है. कितना प्रैक्टिस चाहिए? देखो, क्लासरूम में जितना होगा दैट इज इनफ. इन एडिशन टू दिस व्हाट यू नीड इज 4 to 5 मॉक टेस्ट. दैट्स ऑल. इतना ही काफी है क्वालिफाइंग के लिए, क्योंकि स्कोर नहीं करना है. उससे ज्यादा अगर सॉल्व करोगे इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट विल एनक्रोच योर टाइम फॉर जीएस प्रिपरेशन. समझ में आ रहा है? उसको ज्यादा टाइम दे दो, बिकॉज दैट इज अ स्कोरिंग पेपर जहां रियल कंपटीशन है. तो सीसैट को थोड़ा सा क्या करना है, आपको कट डाउन करना है by using your SWOT analysis, कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है. ये rationally decide करो and accordingly decide how much time you need to give. It may differ from person to person. ठीक है. Then ये एग्जाम का प्रिपरेशन दूसरे एग्जाम में हेल्प करता है क्या? Up to certain extent yes, क्योंकि after 1 or 2 years I receive call from other students who have passed other exam like banking, then TET exam. बट आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉट 100% हेल्प होता है, लेकिन कुछ टॉपिक जो हम यहाँ अच्छे से कवर करते हैं उनका भी इस्तेमाल आप उधर कर सकते हो, जैसे सिलोजिज्म है, क्यूब है, पजल्स है. यू कैन यूज एल्सवेयर, बट ये आपका फोकस नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपका फोकस सीसैट ही पहले होना चाहिए. लैंग्वेज एबिलिटी पे कितना ज्यादा एम्फेसिस देना है, ये भी सवाल हमेशा पूछा जाता है. डोंट ओवर एम्फोसाइज. ओके, लैंग्वेज एबिलिटी इज अ स्किल व्हिच इज वर्थ हैविंग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ लैंग्वेज एबिलिटी के ही ऊपर ध्यान दिया है, कंटेंट के ऊपर नहीं दिया है. सो यू हैव टू बैलेंस. ये ट्रेड ऑफ होना चाहिए. लैंग्वेज एबिलिटी ऑन वन हैंड एंड सब्जेक्ट प्रिपरेशन ऑन द अदर हैंड. इसको कॉम्प्लीमेंट करो, बिकॉज इफ यू हैव बेटर लैंग्वेज एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बी इजी एंड एक्सप्रेसिंग दैट अंडरस्टैंडिंग विल आल्सो बी इजी. लेकिन वो एक्सप्रेस करने के लिए कंटेंट भी होना चाहिए ना.
सो आपको वो बैलेंस करना है, लैंग्वेज एबिलिटी ऑन वन हैंड एंड सब्जेक्ट प्रिपरेशन ऑन द अदर हैंड, ठीक है। मैथमेटिकल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? सो एज आई सेड, स्टार्ट विद एनसीईआरटी, बेसिक थिंग्स, बेसिक ऑपरेशन, इजी पार्ट. Once you get the confidence, move gradually towards challenging part. But the advantage of NCERT, they are written in such a simple language, even a common person can understand it, who doesn't have specialized background. इतने simple language में लिखा है. And finally, target score क्या होना चाहिए? 80 to 100. इसके बीच में रखो. 80 से कम मत रखो, because अगर पेपर टफ आ जाता है, so it may jeopardize your, attempt. 100 से ज्यादा मत रखो, because that is not worth, है ना? आप किसी को बता नहीं सकते मुझे 120 मिला है, so what, doesn't matter, आप पास हो गए, that's enough, है ना? तो इतना ही आपको ध्यान देना है, because it is qualifying paper, but don't discount it altogether, है ना? क्योंकि अब तक का हमारा जो तजुर्बा है, those people who have ignored this, last year a person came to me just before 1 week of the prelim, और मुझे बताया कि सर मैंने कुछ नहीं किया है. Then I told him, unless I have spiritual power, I can't help. मेरे पास ऐसा कुछ स्पिरिचुअल पावर होना चाहिए, ताबीज होना चाहिए या मंत्र होना चाहिए, तभी मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ, अदरवाइज नॉट. He couldn't be. And he had very good score in GS, 120 plus score था. Imagine. कट ऑफ 90 के नीचे होता है. Had he met me 3 months before at least, I would have told him something. एक हफ्ते में क्या बता दूंगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके साथ ना हो. So from the day one, remind yourself, even though it is not that significant, but it is not that insignificant. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा खुद को रिमाइंड करना है. Any questions? Go ahead, because we will take few exercises just to remind you where you are in terms of preparation, and we will stop. So any question, any doubt you want to ask, go ahead. Portion के लिए तो 4-5 months are enough. Class जिस rate से होता है, we start after Diwali. Okay, Diwali vacation, and it is completed in the first week of April or middle of April. तो वो 4-5 month में हो जाता है. Maths and this, I'll be responsible for non-maths part, RC, reasoning, DIDS. ये 3 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा. Maths के लिए अलग पैटर्न. So अप्रैल तक खत्म हो जाएगा आपका क्लासरूम. हाँ, I think they won't eliminate CSAT. They may change its percentage of qualification. May, but sure नहीं. May be increased. Attempts का मालूम नहीं. Don't know. उनका मंत्रा है catch them young. So they may even reduce age as well and attempt as well. May, not sure. Possibility. But see, let me tell you frankly, don't rely on your number of attempts. 1 or 2 attempts, that's all. उसके आगे नहीं जाना है आपको. जो आगे जाना है वो जॉब प्लान बी करके करना है. जॉब पकड़ो, लाइफ में कुछ फ्रूटफुल करो, and simultaneously you can prepare civil services because you already have studied for 2 years. तो वो काफी है. जॉब करते करते 4-5 आवर भी घंटा पढ़ाई करोगे, it is more than enough. और लोग करते हैं वैसा. But don't go for more than 2 years because opportunity cost is too high. अभी जो एज चल रहा है कॉम्पिटिटिव का, this experience doesn't count elsewhere. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत है. ऐसे लोग जो है जिनके पास फैमिली का बहुत कुछ है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, even if you don't get job, you can do well in your life. You have that opportunity. But for many people who want to earn bread and butter, want to get settled in life, for them it is not worth. At the most 3 years. 3 साल के आगे मत जाओ. जाना चाहते हो तो जाओ, but have some job where experience will count, or at least go for post graduation. सीखो कुछ, because that also helps you in furthering your plan.
सो पोस्ट ग्रेजुएशन करो, जो ऑप्शनल लोग है उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी करो, उसका नेट सेट दे दो, या फिर गो फॉर पीएचडी फर्दर एजुकेशन, वो आपको हेल्प करेगा। सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो ऐसा मत करो, इट डजंट हेल्प यू मच। एनीथिंग एल्स? So I couldn't understand the term syllogism. Syllogism is a specialized term used in logic. इसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं, all books are cats, all cats are dogs, ऐसा hypothetical statement होते हैं, और उसमें conclusion आपको निकालना होता है, and there is a process involved. So उसके लिए 3 lectures लगते हैं, because basic is important and how to put basic into practice. So for preparing with the basic, so can we give weekly 2 or 3 hours in the? It depends on you. आपका speed कितना है? Some people will have 1 day even enough in a week. आपको हर रोज नहीं पढ़ाई करना, लेकिन लैंग्वेज एबिलिटी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ना, तो हफ्ते में से 5 दिन तो एटलीस्ट लैंग्वेज एबिलिटी के लिए 15-15 मिनट आप दे दो। हर रोज जो नया वोकैब आ रहा है, ग्रामर आ रहा है, उसको आप यू पे अटेंशन टू इट। सो हर एक कंपोनेंट का अलग डिमांड है। लैंग्वेज एबिलिटी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मैथ्स के लिए यू कैन अफोर्ड 1 or 2 days इन अ वीक, है ना। रीजनिंग के लिए आई डोंट थिंक दैट मच इज नीडेड, इवन इफ यू कैन डू इट बिफोर एग्जाम, स्टिल इट हेल्प्स। सो लैंग्वेज एबिलिटी एंड मैथ्स, ये 2 चीजें हैं जिसके लिए बेसिक आपको चाहिए। Language ability, what is the graph of the, आता आपण स्टार्टिंगला रीड करत आहे, तर त्याच्यामध्ये सिम्पली काय फोकस केलं पाहिजे ते अपकमिंग डेज मध्ये परत डेव्हलप? See, first you try to understand, have you got crux of what you are reading? You know, what we call in Marathi sar, essence. And how that crux is supported by the passage, how they are trying to prove this crux. ये mechanism आपको समझ में आना चाहिए। But ये कब आएगा? When you have good enough vocabulary. क्योंकि अगर किसी भी वर्ड का इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, the meaning changes. समझ में आ रहा है? तो vocabulary और grammar, this is must. Without that, your understanding won't be accurate. आपको ऐसे लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, but you don't know whether that understanding is correct or not. Okay, so ऐसे नहीं होना चाहिए, unless you cross check it with some reliable source. So even if you are solving RC, you should have answer for the questions you are solving and explanation. तभी आपको मालूम पड़ेगा. Otherwise, how will you come to know that what you are solving is correct or not? So most of the UPSC PYQs have answers. लेकिन मार्केट में जो किताबें आती है, उनके जो RC क्वेश्चन होते हैं, वो इतने रिलायबल होते हैं कि नहीं मालूम नहीं, because they are subjective in nature. Subjectivity जहाँ है, there you have to trade with caution. Mathematics में certainty होती है. Maths have certain things where you can confidently tell this is the answer and this is not. लेकिन ये RC के लिए नहीं होता. Language ability में you need to be cautious. क्या आपको समझ में आता है? Over a period you develop a fair grip on what you are doing. but उसके लिए patience चाहिए. Initial phase में frustrating होता है थोड़ा सा. द हिंदू आप पढ़ के देखो. That is a good recipe for insomnia. In the initial period. नींद नहीं आ रही तो द हिंदू ओपन करके बैठो, सो जाओ. इनिशियल ऐसे होता है क्योंकि वो एकेडमिशियन है, थिंकर्स है, प्लानिंग कमीशन में जिसने काम किया है, या फिर जिसने प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो ही इज अ स्कॉलर, है ना. तो उनके लैंग्वेज डाइजेस्ट करना ये इतना आसान नहीं है, बट ओवर अ पीरियड यू डेवलप दैट एबिलिटी एज वेल. जब आपको समझ में आता है जार्गन कैसा है, वर्ड्स कैसे है, सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं, स्टाइल कैसी है, तो आपको समझ में आ जाता है. और न्यूज़पेपर आपको बहुत सारी चीजें भी सिखा देता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट बी सिंसियर इन व्हाट यू आर डूइंग. और शॉर्टकट्स मत इस्तेमाल करो. अभी जो YouTube पे कुछ लोग वीडियो डालते हैं न्यूज़पेपर एक्सप्लेनेशन पे, वो कभी मत देखो. नेवर. दैट इज सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड्स. पहले दिन लेते वक्त अच्छा लगता है, लेकिन परफॉर्म करने की बारी आती है तो दम निकल जाता है. स्टेरॉइड मत यूज करो. यूज व्हाट इज ओरिजिनल एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट. तभी आपको थॉट प्रोसेस एक्टिवेट होगी. यू विल थिंक लाइक दैट, यू विल राइट लाइक दैट. वो जो लोग है ना, वो इतने कॉम्पिटेंट भी नहीं होते एंड दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ पॉपुलैरिटी पाने के लिए वो असिस्टेंट करते हैं. Don't ever do that. You will deprive yourself of real preparation.
and think like common man. You don't have to be bureaucrat to think like that. Common sensical observation आपको होना चाहिए कि इसका impact मेरे life पे क्या हो सकता है. Put yourself in that shoes and think what happens. Then you'll be empathetic. कौन सा भी केस ले लो, put yourself. हंगर डिप्राइवेशन है तो आप सोचो कि एक दिन मुझे अगर खाना नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ माय सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, वोंट यू फील इंसल्टेड? ऑफ कोर्स. सो वो एम्पैथी चाहिए. बेसिक वैल्यूज अगर आपके पास है, योर एनालिसिस इज गुड इनफ. उसके लिए क्या बोलते हैं, हाई लेवल स्कॉलर होने की जरूरत नहीं. बेसिक गुड वैल्यूज चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है कि क्या वैल्यूज चाहिए आपके पास. एंड बाय द टाइम यू आर एडल्ट यू आल्सो लर्न सर्टेन गुड वैल्यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग. वो भी आपके लिए काम करते हैं. इतना अगर एम्पैथी है, कॉमन सेंसिकल है, रूटेड इन ग्राउंड रियलिटी है, जो भी आप कंक्लूड कर रहे हो उसके लिए कुछ तो एविडेंस चाहिए. विदाउट एविडेंस नेवर ट्राई टू कंक्लूड, इट इंडिकेट्स इग्नोरेंस. ठीक है, जो भी आप कंक्लूड कर रहे हो उसके लिए कुछ तो एविडेंस चाहिए. इट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू योर कंक्लूजन. ठीक है, अगर नहीं है एविडेंस तो इन्वेस्टिगेट करो. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ओके, यू नो दिस हैबिट हेल्प्स यू इन आरसी एज वेल. क्योंकि आरसी में जो आप सिलेक्ट करने वाले हो, राइट रॉन्ग, उसके लिए बेसिस होता है. विदाउट दैट यू कांट सेलेक्ट इट एज राइट और रॉन्ग. समझ में आ रहा है? तो ये हैबिट आप पढ़ाई में बिड़ा दो. जो भी आप कंक्लूड करने वाले हो, फ्रॉम वेयर इट कम्स, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी, ये आपको देखना. ऑल राइट, विल अंडरटेक वन एक्सरसाइज. इसमें पहले दो स्किल हम चेक करने वाले हैं. एक है एक्सपांशन ऑफ थॉट्स एंड सेकंड है कॉम्प्रेशन ऑफ थॉट्स. कॉम्प्रेशन आपका आरसी में चेक किया जाता है, एक्सपांशन हम अभी क्लास में करेंगे. सो राइट डाउन वन सेंटेंस. द रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोसाइटी the real strength of Indian society has its genesis in its diversity. Has its genesis in its diversity. Examine the statement. The real strength of Indian society has its genesis in its diversity. Full stop. Examine the statement. अब आपको इसके बारे में सोचना है and see whether you are able to explain it logically in at least 100 to 150 words. इसमें आपका thought process दिखाई देगा, how you think. ठीक है, 100 to 150 words. I'll give you 8 minutes. Start. लिखना है. This exercise is important because I want to highlight RC not only helps you in prelims, it also helps you in main exam. As a part of RC, you learn certain skills which help you not only understanding good text but write it well. Origin, genesis का मतलब है origin, what we call in Marathi ugam.
last 2 minutes. इतना ही वक्त होता है एग्जाम में. So to make it a habit of writing in time. Initially ये नहीं आएगा. Initially you may need more time. लेकिन लिखने की आदत डालो. That is important. From the day one. So simple ऐसे दे दो. अगर ऐसे टॉपिक मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो रिसर्च करके लिखो. But one essay a week. ये टारगेट रखो. And preferably never ever get topics from outside. Get it from either UPSC previous year questions or your teachers. That's all. अगर आप बाहर से टॉपिक ले लोगे, उनका फोकस अगर क्लियर नहीं होगा, you will write anything, and that is not worth the effort. All right, who will read? कौन पढ़ेगा? जो लिखा है वो पढ़ना है. That's all. गलत या सही ये important नहीं. How you think, that is important. Be loud. बैठ के पढ़ो. Indian society is diverse in nature. It consists of diversity in many things such as caste, language, creed, religion, etc. The strength of society, or we can say strong point of society, is its diversity. Diversity is the only true identity or originality of the Indian society. Our Indian society can be identified by its culture and its values, which it inculcates from their ancestors, and that core values are its strength, or we can say true identity of the society. The diversity of Indian society can be well understood by the great statement, or we heard it many times, unity in diversity. All right, ठीक है. Good efforts. और कौन पढ़ेगा? हाँ, बिलो. India is well known for unity in diversity from very past. India has diversified culture, people, religion, flora, nature, climatic regions, but still forms one nation, which gives next level of strength to the people who are the part of this society. Collaboration of these many diversified nature creates economically strong base for the nation.
It affects on people to live a life so happily by adopting and enjoying all kind of culture and all kind of resources for the betterment of their own life, and ultimately benefits the nation to be a outstanding country with diversified society in one nation. Okay, good efforts. Or The multi-pluralistic society of India has proved to be its biggest asset. The diversity seen across industry in our religion has enabled to bring various perspectives on table and examine any issue from different angles. Different identity brings their history, culture, food habit, clothing, etc., which adds to the richness and flourishes the thought process of Indian state. The unity, pride and respect stance has remained intact, and the conviction as the strength of Indian society to the outer world. Numerous religion, reform, architecture, ideas, system finds its origin in India, which is outcome of diversity across the Indian society. see, good. There are certain good elements in your writing. All right. Who else? Go ahead. If you have written, read. Simple. Explain नहीं करनी. जो लिखा है वो पढ़ना है. Anyone else? Okay. Now tell me, how many of you have started with the diversity? Most of you. Is it not? See, many times as an examiner, we can predict how you write. समझ में आ रहा है? हमें पहले से ही मालूम होता है कि स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, वो क्या गलतियां करते हैं. Now keep in mind, writing an answer is like preparing a recipe. आपको मालूम है ना, कुकिंग बेसिक रेसिपीज आपको मालूम होंगे. Like preparing tea, it's a basic thing, है ना? So not only ingredients have to be correct, they are to be put in right sequence. चाय बनाते वक्त, if you put powder first, what will happen? Yes, instead of water, if you put powder first, burn हो जाएगा, काढ़ा हो जाएगा उसका. ऐसे ऐसे हुआ. Even though you had good elements, you put them in wrong sequence. ऐसे sentences जो होते हैं उसमें the ideal point should be key phrase in your sentence. वहां से आपको शुरू करना है, उसको डिफाइन करके शुरू करना है. तो कौन सी की फ्रेज है आपके सेंटेंस में? रियल स्ट्रेंथ. इससे शुरू करना है. यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज रियल स्ट्रेंथ. क्या होती है रियल स्ट्रेंथ सोसाइटी की, किसी भी, फॉरगेट अबाउट इंडियन सोसाइटी. यूनिटी है क्या इंडिया में? यूनिटी नो. Not on everything we are united. Differences है, clashes है. कुछ चीजों के लिए yes we are united, कुछ चीजों के लिए absolutely, है ना? समझ में आ रहा है आपको? भगवान एक है क्या? अलग अलग है. Even within same religion, you have different gods, different ways of worshipping same God. समझ में आ रहा है आपको? So united है लेकिन हर जगह नहीं. So what is real strength then? Real strength of any society. How will you decide that a society is a really strong one? How will you decide? Progress together or develop together. Progress and development or Unity, diversity. overuse phrases. Large amount of diversity, but says diversity must stay not falling apart. Same thing. Literally. Literacy. Okay. What else? Peace and harmony. Peace and harmony. Okay. What else? Economically strong. Economically strong. Education. Or Have what we one view. कब होता है? Good conditions. Health. Okay. अच्छा, forget society. What about a person? When will you call a person strong person?
Morals. Enough to solve which problems. Correct. When a person is able to overcome adverse situations, harsh situations, and able to survive, then only we can term that person as strong one. Normal, इसमें हर कोई बोल सकता है कि मैं strong हूँ. But when challenges are thrown, that really tests strength of the person. So real strength का मतलब है to be able to survive. क्या है? Adverse situation. So हमारी सोसाइटी का हिस्ट्री देखते हैं. Haven't we been able to survive adverse situation, challenges, foreign rule, invasions? समझ में आ रहा है? Then pandemics, famines. लेकिन ये ऑटोमेटिकली आता है कि आपके पास, इसके लिए आपके पास क्या चाहिए? एडाप्टेबिलिटी चाहिए, है ना? ये कब हो सकता है? व्हेन यू आर एडाप्टेबल एंड टॉलरेंट. तभी आप यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्वाइव. समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये ऑटोमेटिकली आता है क्या? नो. व्हेन यू आर एक्सपोज टू what? Different forces and ideas. Then you become adaptable or tolerant. So दो स्टूडेंट्स ले लो, एक घर में रह रहा है, एजुकेशन ले रहा है, एंड दूसरा हॉस्टल में रह के एजुकेशन ले रहा है. Who do you think is more adaptable? हॉस्टल है, क्योंकि उसको चैलेंजेस बहुत है. घर का कंफर्ट है क्या? नहीं, गर्म पानी नहीं मिलेगा, वक्त पे खाना नहीं मिलेगा, खाना मिला तो वो अच्छा नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? Sometimes money will not be there in the pocket, emergency will be there. Now in our case, Indian society, diversity has been there since inception. Inception का मतलब है जहां तक के historical records हमारे पास है, वहां से अगर if you study Indian society, it has been diverse from the beginning. So if you look at Vedic religion or Hindu religion, है ना, oldest है ना ये, तो इसमें do you think there is any unanimity about anything? Symbolically हमारे यहाँ भगवान कितने हैं? और वो छोड़ दो, हर एक गांव का खुद का भगवान होता है, ग्राम देवता, which is not found anywhere else. अगर वहां आपने नवस बोल दिया तो हो गया काम आपका, उधर ही आना पड़ेगा, ऑनलाइन भी नहीं आप फुलफिल नहीं कर सकते. डाइवर्सिटी है ना. विद इन हिंदुइज्म यू हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स लाइक अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, एंड देयर डिवीजन डिपेंड्स ऑन हाउ दे लुक एट रियलिटी एंड भगवान, गॉड को कैसे देखते हैं. सो द्वैत सेज मैन एंड गॉड आर डिफरेंट, गॉड इज सुपीरियर, बट देयर इज अ ड्युअलिज्म. Vishishta Advaita says dualism is sort of apparent. Man is a part of God. है ना? And Advaita says no, there is absolute non-dualism. There is only one thing, God. Diversity is only illusion, Maya. So ये diversity पहले से ही है, इसलिए जो भी नया आया है उसको हमने accommodate किया है. Of course we rejected something, but we accepted something. समझ में आ रहा है? And that has made our society tolerant, adaptable. So pandemic में दिखाई दिया आपको. Haven't you seen that people easily accepted rules and regulations of government even though they were coerced? But what happened in European and American countries? People resisted the controls, the restrictions, and there people died more, percentage wise. समझ में आ रहा है? ये किस वजह से होता है? Tolerance. And because of this tolerance and adaptability, our land has given rise to new cultures. तो सूफीज्म देखो, उर्दू लैंग्वेज देखो, ये पहले से नहीं थे. ओके, ये बाहर भी नहीं थे, इधर भी नहीं थे. They have emerged out of fusion of
two different cultures. So Sufism is fusion of what? Islam and Bhakti movement. समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो होता है ये आप हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है. So even though new challenges are thrown around us, we are able to survive them. समझ में आ रहा है? ये लॉजिकल नैरेटिव आपको देना है. Then your answer stands apart from the crowd. Otherwise, everyone will write in the same way and everyone will get same marks. That doesn't make you topper material. You have to think well, you have to write well. And then you have to give historical examples, current examples, drawn from different domains of current affairs. So see, writing an answer is like, let me give you an analogy. Suppose this is your syllabus and these are your sources, like books, notes, newspapers. Questions are asked from these areas in the syllabus, but not directly given in the books. So आपको क्या करना है? इसके ऊपर काम करना है, इसको expand करना है, thought expand करना है आपको, and bring these areas under your thought process. And this is 3D diagram as well. You have to go deeper as well. Is that clear? And this is where real preparation lies. So my claim is, if you study CSAT sincerely and RC part particularly, you will be able to detect something in the text which is not directly and obvious. You can say something which is given but not direct, obvious. You can read between the lines. You can paraphrase things in your own words, and you can say same thing in different words. And this is what utility of CSAT. It is not merely there for prelims. It is also there for your pre examination. So use CSAT and RC particularly to hone your language ability. जब भी आप पढ़ोगे, आपको ये भी देखना है कि ये कैसे लिखा है. How a writer writes, how he or she thinks, and how we draw conclusion out of that writing. तभी आप आपका जो day in day out same material सबके पास है, वो आप अच्छे से process करोगे. And your study will be qualitative study. It won't be merely quantitative. And then your writing will be logical, orderly. You can arrange your ideas in orderly fashion and naturally leading towards conclusion. So ये आपको आना चाहिए. This is the purpose of CSAT, not merely to qualify for this. See, anyway you are going to study CSAT, right? You don't have option. So why not make it use to hone your writing and studying skills? It is like sharpening your weapon, sharpening your axe before you cut the tree. If it is blunt, it will take a lot of time to cut the tree, and it will injure yourself. So ऐसा बहुत बार होता है. After 6 months, 1 year, when people meet us again and again and tell us that they have not developed grip over the subject, it is because they are following wrong methods of study. सिर्फ पढ़ना, read करना मतलब study नहीं है. You have to take pauses, you have to think about it, you have to write things in your own words, you have to explore them on internet. ये जब आप करोगे तभी आपका पढ़ाई होगा. And not many people do this. So ये आपको आदत डालनी from the table. Initially it will take a lot of time. It may appear very sluggish, slow process, but over a period it will be a part of your habit. And you don't have to make separate efforts. You will do it without being told. इससे grip अच्छा आ जाएगा, conceptual clarity आ जाएगा, language ability अच्छा आ जाएगा. And by the time your course is over, you will be confident to write good answers. And that should be the outcome of your course. Your course is mainly focused on main exam, 80%, 20% part is focused on prelims. So towards the end हो जाता है, when your exam is around the corner, we take those subjects which are purely for prelims, like CSAT and other subjects which are not there in your main exam. Okay? All right, guys, this is enough for today. I think. Any questions, please ask. Next lecture, that will be probably after Diwali. We will start with RC. We will have one session on vocabulary. And RC we will need at least
8 to 10 sessions, enough exercises,